एवरीवन जय जगन्नाथ। आज पुणी मिशन टीचर आपण मानक पई नहीं आसी पेडागोजी रो मॉक टेस्ट 2 मॉक टेस्ट 1 ऑलरेडी आम चैनल ले अपलोडेड अच्छी जो माने भी देई नाहंती जाइकी आपणकर स्कोर आपणकर प्रिपरेशन केते करिसंती जाइकी टेस्ट करि पारंती। तो आज आम आसी मॉक टेस्ट 2 रे पहुंची जाइछु। तो मॉक टेस्ट 2 टी आरंभ करबा पूर्वरु आमे टिके मिशन टीचर विषय रे जानिबा। मिशन टीचर हेउची एमिति एक यूट्यूब चैनल जो थिरे यूनिट वाइज थ्योरी क्लासेस सहित डिटेल्स MCQ डिस्कशन मध्य होई थाए जहार सबु फ्री मटेरियल्स PDF सबु हमर टेलीग्राम चैनल मिशन टीचर ओडिसा रे प्रोवाइड करा जाहि थाए। आहुरी मध्य आमे प्रतिदिन आपनकु स्टडी टारगेट दउचु जो द्वारा आपण माने बोथ OAVS सहित SSB TGT एग्जाम मध्य क्रैक करि पारिबे। तो से जो स्टडी टारगेट आमे प्रतिदिन आमर टेलीग्राम चैनल ले दउचु प्रतिदिन सकाळ 6टारे आ आमर व्हाट्सएप चैनल ले मध्य दउचु। तो आपण माने जल्दी जल्दी जाइकी आमर टेलीग्राम चैनल आ आमर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हे जानतु आहुरी आपणकर प्रिपरेशन को बूस्ट करंतु। हैला चलंतु आजिर मॉक टी स्टार्ट करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन आपण मानक सामना रे ए प्रोजेक्ट इज ए problematic act carried to completion in its natural setting. Who said it? ए जो कोड्सटा किए कहिथिले ए जाको मने रखिबे कारण आर आ किछि भी सब्स्टिट्यूट नै किछि बुझिबार नै डायरेक्टली आको मने रखिबार अछि कारण एग्जाम रे क्वेश्चन आसुछि। आज जो आमे 25 टी क्वेश्चन करिवु सबु जाको PYQ ते बहुत इंपोर्टेंट आपण मानको एग्जाम प्रोस्पेक्टस रे तेनु मन देखंतु सुनंतु निजे मध्य करंतु। ठीक अच्छे तो आंसर विल बी ऑप्शन बी स्टीवेंसन कहिथिले कोन कहिथिले ए प्रोजेक्ट इज ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग। हु सेड स्टीवेंसन सेड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बा हां तापर देखि दबा आ गोटे इंपोर्टेंट कोड देखंतु किलपैट्रिक कोन कहिथिले डिफाइन इट एज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट। मु एटा एथि पई मेंशन करिछि एटा भी PYQ रे गोटे को वर्ष आसीथिला। हैला नेक्स्ट चलंतु जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को द नंबर ऑफ टीचर्स टू बी नॉमिनेटेड टू SMC इज। नंबर ऑफ टीचर टू बी नॉमिनेटेड टू SMC रे केते जण टीचर थांती ए ऑप्शन ए 1 जणे ही टीचर नॉमिनेट हेई थांती SMC पाई। हैला तो अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट गाइडलाइन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन of a school management committee or SMC तो केते दरकार 75% of a member must be parents or guardian 75% parents guardian रहिबे। the remaining 25% consist of local authority member local educationalist alumni exactly one teacher मने रखिबे केते जण टीचर one teacher elected or chosen from among the टीचर ऑफ द स्कूल। तो 75 जन गार्डियन बा पेरेंट्स रहिबे जो मानक पिला माने से स्कूल ले पढुचंती आउ से जो आउ 100 रु आउ जो 25% रहिले सेही भितरे के रहिबे लोकल एजुकेशनलिस्ट बा अलुमिनी एक्जेक्टली वन टीचर आउ लोकल अथॉरिटी मेंबर एतिकी रहिबे मने रखिबे। एटा केबे हेतिला राइट टू एजुकेशन एक्ट अनुଯାयी हेतिला। हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा Who was the propounder of multiple theory of intelligence? किए propounder multiple theory of intelligence रो गार्डेनर। आंसर हबो ऑप्शन सी। तो देखंतु टू फैक्टर ए जो थ्योरी केतेटा मेंशन करिछि मु ए जाको इंपोर्टेंट हैला। तो टू फैक्टर थ्योरी किए प्रपोज करिथिले चार्ल्स पियरमैन किए करिथिले चार्ल्स पियरमैन। टू फैक्टर थ्योरी रे गोटे G फैक्टर थाए गोटे S फैक्टर थाए माने जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर हैला। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी प्रपोज्ड बाय JP गुलिफोर्ड। सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन
ट्रायर्किक थ्योरी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग भेरी इंपोर्टाट ट्रायर्किक थ्योरी किए देइथिले रॉबर्ट स्टर्नबर्ग तो ये जो ट्रायर्किक थ्योरी रे तीनटा जिनस कौन कौन अच्छी एनालिटिकल क्रिएटिव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है नेक्स्ट फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय रेमंड केटेल नेक्स्ट आसीबा ग्रुप फैक्टर थ्योरी बाय लुइस लिओन थ्रस्टन देइथिले हैला सेइथिरे 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी विषय रे कुहा जाई थिला चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा हाँ मल्टीफैक्टर थ्योरी पुणी किए देइथिले मल्टीफैक्टर थ्योरी देइथिले एडवर्ड थॉर्नडाइक हैला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रो एग्जांपल टीचर लाइब्रेरी क्लासरूम प्लेग्राउंड आंसर विल बी टीचर ह्यूमन कहिछ ना ए जाक तो सब नॉन लिविंग थिंग्स जाक टीचर ही तो लिविंग थिंग्स तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रे जिबे तो देखिबा चलंतु तो हमर जो एजुकेशनल मैनेजमेंट रे रिसोर्स होची दुई प्रकार रो कोन ह्यूमन रिसोर्स फिजिकल बा मटेरियल रिसोर्स ह्यूमन रिसर्च रे कौन कौन आसबे टीचर्स प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लाइब्रेरियन स्टूडेंट्स एक्सेट्रा फिजिकल ले तो जानी लाइब्रेरी क्लासरूम प्लेग्राउंड ए सबू आसबे हैला तापरे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को बाय व्हिच मेथड ऑफ असेसमेंट द वीकनेस ऑफ ए लर्नर कैन बी आइडेंटिफाइड लर्नर रो वीकनेस कोड देखा जाए रे कंटीन्यूअस रे ना डायग्नोस्टिक रे ना सबमिटिव रे ना फॉर्मेटिव रे लर्नर रो वीकनेस आसिला माने सबु बेले डायग्नोस्टिक असेसमेंट मारिबे कंटीन्यूअस असेसमेंट ताहले कोन कंटीन्यूअस असेसमेंट होची जो असेसमेंट वर्ष सारा चली थाए सबमिटिव ता तेबे कोन सबमिटिव होची एनुअली फॉर्मेटिव टा हबो वीकली मंथली ए टेस्ट जाक हबो फॉर्मेटिव हैला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हेन डिड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन स्टार्ट इन आवर स्टेट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन केबे स्टार्ट हेथिला 2007 रो 2008 भितरे स्टार्ट हेथिला मन रखिबे development proceeding in the direction of longitudinal axis is called longitudinal माने head to foot head to toe कोटा हबो head cephalocaudal तो proxiomodestal टा कौन देबे center to periphery कौन center to periphery तो longitudinal लो आंसर कौन हबो सॉरी cephalocaudal हैला which is not related with the objective of motives एई भितरु motives रो कोटा objectives नुहे to energize the behavior, to stabilize the behavior, to stimulate the behavior, to activate the behavior. तो answer will be option B, to stabilize the behavior. To stabilize तो motives कौन तार कौन सब characteristics चलंतु देखिबा motives in psychology motives are the internal drives needs desires that compel an individual to take action toward a specific goal गोटे specific goal को जिबा पई जो interest need desire थाए this is called motive तो तार primary objective कौन थाई तेबे to energize behavior activate behavior stimulate behavior direct behavior हला बुझी पारिले next question को जिबा which is not associated with intellectual development कोटा नुहे memorization concept formation observation socialization टा होची social development आउ सब जो memorization concept formation observation these are called intellectual development बुझी पारले next question को जिबा which method is different from the other three in assessment point of view रू कोटा अलगा field work group work project work classroom demonstration answer will be obviously classroom demonstration field work field रे हबो पिला माने ही करिवे ग्रुप वर्क मध्य पिला माने प्रोजेक्ट वर्क मध्य पिला माने किंतु क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन टीचर करिवे पिला माने इंटरैक्ट करिवे हैला नेक्स्ट क्वेश्चन
Which of the following is a demerit of observation? More reliable, more searching, time consuming, very flexible. Demerit of a observation, time consuming. Time consuming will be the answer. Observation रे बहुत time consume करे ना तो तार से demerit ही हबो. चलंतु according to Thurston approach intelligence comprises how many types of mental ability. मुझे केतेटा क्वेश्चन पूर्वर एनालिसिस करी ना थ्रस्टर कर इंटेलिजेंस रे केतेटा थाए 7टी थाए कही ना. देखंतु क्वेश्चन को डिटेल्स रे ऑप्शन वाइज एनालिसिस कले केते फायदा देबे देखंतु. तो according to Thurston approach intelligence comprises how many types of mental ability? 7 types of. Answer will be option A. तो लुइस लियोन थ्रस्टन थियोरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी PMA प्रपोज दैट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट फैक्टर. से जो 7 फैक्टर से जाक होची वर्बल कम्प्रिहेंशन, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर फैसिलिटी, स्पाशियल विजुअलाइजेशन, एसोसिएटिव मेमोरी, परपिचुअल स्पीड, रीजनिंग. ओके जानी पारिले. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. Which principle is not associated with growth and development? Principle of continuity, principle of contiguity, principle of integration, principle of segregation. segregation माने separation. आउ सबुर मीनिंग सेम. इंटीग्रेशन भी जोड़ी रखिबा, कंटिन्यूटी माने कंटिन्यूअस चलीबा. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. तो देखंतु कंटिन्यूटी माने कोन? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इंटीग्रेशन होची वेरियस एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्क टुगेदर. नेक्स्ट कंटिग्यूटी इज ए कॉन्सेप्ट फ्रॉम लर्निंग थियोरी जार माने होची एसोसिएशन. बाकी सेग्रीगेशन होची सेपरेशन जोटा कि डेवलप ग्रोथ और डेवलपमेंट रो प्रिंसिपल नुहे हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. What is the sequence of preparing a project? तो गोटे प्रोजेक्ट जेतेबेले आमे करू को सीक्वेंस रे करू रे. फास्ट तो टॉपिक टा चूज करी सारला परे प्लान करू केमती को प्रोसेस रे को मेथड रे करिबू. प्लान करी सारला परे ताकू एग्जीक्यूट करू. एग्जीक्यूट हे सारला परे इवैल्यूएशन हुए. तो आंसर कोन हबो? आंसर हबो ऑप्शन ए, चूजिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, इवैल्यूएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा पूर्वरु आमे जानिबा प्रोजेक्ट मेथड किए देइथिले. प्रोजेक्ट मेथड बाय किलपर्ट्रिक हैला. किए देइथिले किलपर्ट्रिक. In which step difficulty value and discriminating power of a test item are determined? In को step रे difficulty value और discriminating power को टेस्ट करा जाए. try out, planning, preparing, organizing. answer will be try out. try out session रे करा जाई थाए. देखंतु item analysis which involve calculating how difficult a question is, how well it distinguishes between high and low performer take place during try out phases. माने गोटे टेस्ट रो केते डिफिकल्टी अच्छी, हाई परफॉर्मर लो परफॉर्मर मानक भितर कौन डिफरेंस रहिबो देले सेटा सब बेले ट्राई आउट फेज रे करा जाए. ट्राई आउट फेज को आहुरी पायलट फेज मध्य कुहा जाए हैला. दिस एनश्योर द टेस्ट इज इफेक्टिव बिफोर इट फाइनालाइज. जो ट्राई आउट फेज एथि करा जाई थाए गोटे टेस्टा फाइनालाइज पूर्वरु सेटा केते इफेक्टिव सेटा जणा पड़ी थाए. Next question. In India, the school administration should be democratic, autocratic, bureaucratic, idealistic. Answer will be democratic. In which test raw scores are directly interpreted? Raw scores are directly interpreted. Standardized test, objective test, teacher made test, objective based test. The answer will be teacher made test. Answer will be teacher made test. हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस इंक्लूड सोशल डेवलपमेंट फियर एंड सेम,
adult like behavior, restlessness, imagination. Answer will be adult like behavior. adult like behavior टा social development रे आसीबो. fear, shame, restlessness, imagination ए जाक सब mental development रे आसीबो. तो social development रे कोन आसीबो adult like behavior. Next question, which one is the internal condition of learning? Contiguity, practice, discrimination, entering behavior. Internal condition of learning will be entering behavior. Option D will be the answer. तो देखंतु according to Robert Garne, condition of learning entering behavior refers to the internal state. गाने को मतरे entering behavior ता कौन करे internal state को रेफर करे. ହେଲା बुझी पारिले. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. which type of motivation is related to reward? reward टा को टाइप ऑफ मोटिवेशन रे. तो फास्ट मते कहंतु हमर मोटिवेशन केते टाइप रो. मोटिवेशन होची टू टाइप्स रो. गोटे होची एक्सट्रिंसिक आ गोटे होची इंट्रिंसिक. तो रिवार्ड पाइबाटा तार कौन होबो इंट्रिंसिक तो होबोनी ता भितरु तो आसुनी बाह्य ये ना. तो आंसर विल बी एक्सट्रिंसिक. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. Next question, concept formation primarily relates to concept formation, cognitive development, psychomotor development, affective development. Concept formation होची cognitive development. ହେଲା cognitive development. concept टा कोठी हुए cognition रे हुए ना. तो concept formation टा होबो cognitive development. ହେଲା next question, which of the following is related to learner's handwriting? family, society, environment, maturation. answer will be maturation. काहे कि maturation हबो चलंतु देखिबा. handwriting is a complex task that require fine motor skill. question आसी जिवो ए भितरु कोउटा fine motor skill गोटे थाय हमर fine motor skill आ गोटे आसे gross motor skill. ହେଲା तो हैंडराइटिंग टा हबो हमर फाइन मोटर स्किल जो थिरे कि हैंड आउ आई रो कोऑर्डिनेशन रही थाए. दिस स्किल आर हेवीली डिपेंडेंट ऑन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन लु आसी थाए. एटा होला. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. which is not a factor of democratic management रो. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a factor of democratic management रो कोटा फैक्टर नुहे. कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, इम्पोजिशन. आंसर विल बी कोऑपरेशन. डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रो फैक्टर नुहे. कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, इम्पोजिशन हबो. हैला सॉरी टिके भूल कहीदेली मु. देखंतु कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन विल आर द फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट बट इम्पोजिशन is not the factor of democratic management. तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. मुझे भूल मार्क कर देछि. ऑप्शन डी विल बी द आंसर. मन रखिबे इम्पोजिशन तीनटा ठारो डिफरेंट हैला. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. progressive change in quality, composition and character is called growth, development and progress. कोटा हबो तेबे प्रोग्रेसिव चेंज इन क्वालिटी कंपोजिशन. तो आंसर विल बी डेवलपमेंट. एटी ऑल ऑफ द एबव मारी देबे नाही. भल से देखिबे प्रोग्रेसिव चेंज केतेबेले हेई थाए डेवलपमेंट रे. हैला नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए टूल ऑफ ऑब्जर्वेशन. कोटा ऑब्जर्वेशन लो गोटे टूल नुहे. रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड. आंसर विल बी अचीवमेंट टेस्ट ऑब्जर्वेशन रो टूल नुहे. तो देखिबा चलंतु. रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट आर यूज टू ऑब्जर्व बिहेवियर. रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट बिहेवियर ऑब्जर्व पई यूज हेई थाए. किंतु अचीवमेंट टेस्ट इज ए टूल यूज टू मेजर एक्वायर्ड नॉलेज स्किल यूजुअली थ्रू ए रिटन एग्जाम. बुझी पारिले. तो रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट सब बेले बिहेवियर ऑब्जर्वेशन पई यूज हेई थाए. रेदर अचीवमेंट टेस्ट मेजर करे कोन रिटन एग्जाम
बा नॉलेज आउ स्किल एबिलिटी ए सब को मेजर करे बुझी पारिले। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज द फर्स्ट फेज ऑफ लर्निंग सीक्वेंस रो फर्स्ट फेज कोटा मैच्योरेशन मोटिवेशन इंटरेस्ट एंड एक्शन आंसर विल बी मोटिवेशन फास्ट फेज मोटिवेट हेले तो जाइए आम जो कामटा करिपरिबा तो फास्ट फेज होउची लर्निंग सीक्वेंस रो मोटिवेशन तो फास्ट फेज कौन मोटिवेशन आंसर विल बी ऑप्शन बी हैला। आज एटा लास्ट क्वेश्चन थिला आज आम 26 क्वेश्चन डिस्कसन कलु 26 रु आपण केतेटी ठीक कले कमेंट सेक्शन ले आपणकर स्कोर निहाती जणैबे। जदि वीडियोटी भल लागिची मॉक टेस्ट टी भल लागिची तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। देखंतु पूरा यूट्यूब सारा खोजी आसबे समस्ते MCQ करांती आंसर खाली किंतु आमर मिशन टीचर सबु बेले डिटेल्स एनालिसिस सह करि थाए जो द्वारा नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आसीबो से ऑप्शन अकॉर्डिंग तो सबु क्वेश्चन अटेंड करी हबो। तो आमर मिशन टीचर रे डेली OAVS SSB TGT पई क्लास चलुची इकोनॉमिक्स हिस्ट्री क्लास सबु चलुची। जदि आपन को PDFs दरकार आम क्लास नोट्स भल लगुची तो जाइकी आपण आमर टेलीग्राम आ आमर व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हे जिबे सेठी मध्य आमे आपण को प्रतिदिन स्टडी टार्गेट मध्य दउचु। तो आउ डेरी न करी आमर टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ले जॉइन हे जानतु आहुरी नुआ नुआ कंटेंट सहित आमे नहीं आसबू आपण मानक पई आपणकर प्रिपरेशन को आहुरी बूस्ट करेबू ठीक अछि। आज पई एतिकी थैंक यू सो मच।